Am I visible to you? Is my voice clear? Okay, fine. I welcome you all. Walaikum assalam. Good afternoon. Akib, walaikum assalam. Irwa, walaikum assalam. Faisal, walaikum assalam. Hassan, walaikum assalam. How are you all? Walaikum assalam, Shehzad. Mohsin Khan, walaikum assalam. But Farooq, walaikum assalam. कश्मीर फॉर यू, आप अपना नाम रखिए. वालेकुम अस्सलाम. हयात, वालेकुम अस्सलाम. सजाद, वालेकुम अस्सलाम. उवैस, वालेकुम अस्सलाम. परमीत कौर, गुड आफ्टरनून. उमर, वालेकुम अस्सलाम. मोहसिन खान, प्लीज उर्दू ज्यादा यूज करें प्लीज. मोहसिन, मैं बाइलिंगुअल मेथड ही यूज करता हूँ, बट दिस इज एन इंग्लिश क्लास, आई हैव टू यूज इंग्लिश एज वेल. But Farooq, this is class for BA first semester and this is English communication skills. Let's wait for 20 more seconds, then we'll start our class. Meanwhile, you open page number 124 on your textbooks. We are currently discussing marriages are made. Khurshid, walaikum assalam. Sahil, walaikum assalam. I think we should start. Tanveer, walaikum assalam. Okay, page number 124 on your text. Marriages are made. We started it yesterday. This is a poem written by Eunice de Souza. Eunice de Souza, as we already discussed, she is an Indian English poet. And she has completed her PhD from the Mumbai University. She was also a professor of English literature. And she vehemently, discusses the issues of females, the female subjugation within her poems. अगर आप इसकी पोइट्री की तरफ देखें तो फीमेल्स के इश्यूज, जो जेंडर बायस है सोसाइटी का, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट वुमन, वो हाईलाइट होता है इनकी पोइट्री में. तो जो हमने कल भी पोएम पढ़ी, मैरिजेस आर मेड, if you look at the title of this poem, marriages are made, it somehow shows us that these marriages, they are not made in heaven, they are actually a source of hypocrisy, they are a source of exploitation, wherein females, they are exploited by the side of the males. Actually, this shows us the patriarchal setup of our society. जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. उस वजह से क्या होता है कि जो भी सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है वो फीमेल्स के अगेंस्ट होता है. जिन्होंने कल क्लास नहीं दी उनके लिए थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं. जो ये पोएम है ये बेसिकली फोकस्ड है, जो पोइटेस है हमारी यूनिस डिसूजा, हर कजन is going to get married, whose name is Alina. And all the formalities that we usually see in our society, वो फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी हो जाती है. और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज का मतलब है स्क्रूटनी होती है. एक किस्म से देखा जाता है कि जो वुड बी ब्राइड है क्या वो ठीक है, क्या उसका हेल्थ ठीक है, क्या उसकी आंखें ठीक है, क्या उसके फादर जो है वो डेट में तो नहीं है, क्या वो फाइनेंशियली साउंड है, कैसा उसका कम्प्लेक्शन है. तो ये सारे क्राइटेरिया जो है वो पहले सेटअप किए जाते हैं. देखते हैं ये वेदर शी फुलफिल्स दीज क्राइटेरिया और नॉट. और आखिर में बोला जाता है कि जब ये सारे क्राइटेरिया जो है फुलफिल होते हैं उसके बाद ही वो कहते हैं कि नहीं, शी कैन डू जस्टिस टू द ग्रूम. अब
ओवरऑल इफ वी लुक एट दिस पोएम, हमें ये पता चलता है कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वहां पे मैरिज जो है, जो कि इफ वी लुक एट अवर रिलीजियस टेक्स्ट वी सी दैट मैरिजेस दे आर a sort of blessing if we look at the religious texts. But in our society, we have constructed, we have made these marriages a sort of a bargain, wherein mostly what happens is that from the male side, discrimination takes place. जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमेशा फीमेल्स में ही देखी जाती है, और हमारी जो पोएट है वो भी इसी चीज को हाईलाइट करना चाहती है. इफ यू लुक एट द पोएम, इट इज एन आयरॉनिक पोएम. एक तो आयरॉनिक भी है, इट इज अ सटायर ऑन द हिपोक्रेसी एंड द प्रिजुडिसेस ऑफ द सोसाइटी. कैसे प्रिजुडिसेस है, और अल्टीमेटली जो मैरिज है, जो एक हेवनली चीज थी, उसको एक एक्सप्लॉइटेटिव चीज बनाया जाता है. तो ये उनके लिए जो जिन्होंने कल क्लास नहीं दी. टुडे विल मूव फॉरवर्ड एंड विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. एंड यू ओपन पेज नंबर 126. Give detailed answers to the following questions. Comment on the significance of the title. As we already discussed, the title is Marriages Are Made. What you usually see printed on the invitation cards, it's mentioned that marriages are made in heaven and they are celebrated on earth. That's what you find on the invitation cards. But here, marriages are made. The title is ironic in itself. Irony इसमें क्या है? Irony ये है कि marriages जो एक heavenly blessings थी, उनको ऐसे अब पेश किया जाता है, वो एक सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बन गई है. अब हम इस आंसर को जो है वो इलैबोरेट कर सकते हैं. इलैबोरेट कैसे कर सकते हैं? हम पोएम की तरफ देखते हैं एंड वी सी दिस लीना, द कजन ऑफ द पोएट, शी इज गोइंग टू गेट मैरिड. And whole of the poem discusses the scrutiny that is done by the side of the groom. और वो scrutiny क्या है? First, her family history is examined. ये देखा जाता है whether they have a history of TB, whether they have a history of madness. अब ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद ही जब ये पता चलता है कि नहीं, मैडनेस भी नहीं है, टीबी भी नहीं है, तो एक्सेप्ट किया जाता है. उसके बाद इतना ही नहीं, then they move a step further. Then they discuss, they see whether her father, is he financially sound or not. And if he is in debt, they will cancel the marriage. अगर उनका कोई कर्जा वगैरह है तो शादी नहीं हो पाएगी. उसके बाद उनकी आईज को एग्जामिन किया जाता है. उसके बाद even they go to the extent of checking the stools of the bride. अब ये scrutiny जो है, this shows us the dark side of the society. वो सोसाइटी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. उसके बाद कंप्लेक्शन पे बात आती है. कंप्लेक्शन एक्सेप्ट किया जाता है, नो इट्स एक्सेप्टेबल. उतना ज्यादा फेयर नहीं है, उतना ज्यादा डार्क भी नहीं है, इट्स जस्ट राइट. उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो है ब्राइड, शी इज फिट फॉर द ग्रूम. बट अगर आप पोएम की तरफ क्लियरली एनालिसिस करें, यू विल नेवर सी कि मेल साइड से जो फ्रांसिस्को एक्स नरोहा प्रभु है, हु इज द वुड बी ग्रूम, उनकी कोई स्क्रूटिनी नहीं होती है, उनका कोई चेकअप नहीं होता है. ये दिखाता है हमें कि ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इट हैज ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड, इट हैज ऑलवेज बीन प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट फीमेल्स, इट हैज बीन प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट द फीमेल साइड. तो टाइटल जो है अपने आप में, जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि दिस टाइटल इन इटसेल्फ इज आयरॉनिक. जो मैरिजेस हेवन में बनी हुई होती थी, जो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट कहता है, ऑन पेपर इन द सोसाइटी वी डोंट सी एनीथिंग लाइक दैट. वी सी जस्ट अ सॉर्ट ऑफ कंट्रैक्ट, और वो कंट्रैक्ट इसलिए बनाया जाता है, और उस कंट्रैक्ट में भी सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है फीमेल्स पे, मेल्स पे कोई फोकस नहीं होता है, एज वी सी इन द पोएम. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1. देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Describe the humiliation which Alina is subjected to in the poem
Would you agree that this cultural practice cuts across all castes and creeds in India? Give a reasoned answer. Now, we have to first understand, do we accept this fact that Alina was subjected to humiliation? Yes, this is humiliation. When you examine the medical history of a would-be bride, when you examine her eyes, when you examine her physical health, when you even examine her complexion, you examine even her stools, that is humiliation in itself. इससे ज्यादा कोई humiliation नहीं हो सकती है, because we do not consider Alina as an individual. We do not consider her as a human being. We just consider her as a commodity, as an object. जिस ऑब्जेक्ट को शायद ये ग्रूम जो है अपने घर लाना चाहता है और उसको वहां पे कैद करना चाहता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ना रिलीजियस टेक्स्ट ये सिखाता है, ना तो हमारा कॉमन सेंस ये बताता है कि हम डिस्क्रिमिनेट करें। वी शुड बी वी शुड accept this fact that all humans are irrespective of their color, irrespective of their caste, irrespective of their gender. और यहाँ पे विद इन द इंडियन सोसाइटी व्हाट वी सी इज, हालांकि बहुत हद तक चेंज आ चुकी है, बट स्टिल दिस पैट्रियार्कल सेटअप इट इज प्रेवलेंट. If you look at our society also, this patriarchal setup, it is very much prevalent. You see the domestic violence that is taking place. बहुत सारी लड़कियों को जलाया जाता है, बहुत सारी लड़कियों को पीटा जाता है. दैट इटसेल्फ शोज कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का नेचर कैसा है. वो कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो उनके ईगो के अगेंस्ट हो. यहां पे भी ह्यूमिलेशन का एक लेवल जो है वो क्रॉस होता है जब सब चीजें एग्जामिन होने के बाद ही ये फैसला लिया जाता है दैट एलिना इज टू बी मैरिड एंड शी कैन डू जस्टिस. सर क्या ये फर्स्ट लेसन है? वी हैव स्टार्टेड विद पोइट्री, उसके बाद हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू द फॉर्मेलिटीज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम reveal the oppression of women? Abhi, we have just discussed this answer. Formalities क्या है? These are actually the scrutinies that are done. अब इस scrutiny क्या क्या है? Eyes examine होती है, family की history examine होती है, and then even the eyes of the bride are examined, her complexion is examined. तो ये oppression ही है. Now consider that इनकी आईज में भी प्रॉब्लम होती. कंसिडर दिस फैक्ट कि इनकी फैमिली हिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होती. कंसिडर दिस फैक्ट कि कोई प्रॉब्लम होती. तो दैट मीन्स अगर किसी के यहाँ कोई फादर है तो वो डेट में है, उनका कर्जा है. क्या उसका मतलब ये है कि उसकी बेटी की शादी कभी नहीं होगी? क्या उसका मतलब ये है कि उसकी बेटी जो उसको कोई हक नहीं है शादी करने का? तो ये ऑपरेशन ही दिखाता है. जब हम ये सारे क्राइटेरिया जो है सामने लाते हैं एंड देन वी डिसाइड वेदर वी शुड मैरी और नॉट, वी आर नॉट मैरिंग द इंडिविजुअल, वी आर नॉट मैरिंग दैट पर्सन, वी आर जस्ट मैरिंग दोज criteria. We are just marrying those things which are outside of that person. If somebody marries a person just because he is earning or he is getting a handsome salary, what do we know about that? हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम उसकी सैलरी के साथ शादी करते हैं, हम उस एज अ पर्सन उसके साथ शादी नहीं करते हैं. तो जब एक कंप्लेक्शन पे बात आती है कि हम उसी के साथ शादी करेंगे हु इज अ फेयर कंप्लेक्शन्ड पर्सन, तो हम तो उसकी कंप्लेक्शन के साथ शादी कर रहे हैं. द फैक्ट इज दैट वी हैव टू वैल्यू अ पर्सन, वी हैव टू वैल्यू हर इंडिविजुअलिटी, हर आइडेंटिटी, जो कि यहाँ पे अलीना के साथ नहीं होता है. अलीना के साथ सिर्फ वही सारी चीजें देखी जाती है जो उसके अपने हाथ में नहीं है. उसका कंप्लेक्शन अपने हाथ में नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री अपने हाथ में नहीं है. तो इस सेंस में ये सारी चीजें जो है दे बिकम अ सोर्स ऑफ ऑपरेशन, और उस वजह से जो है ये मैरिज जो है इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Comment on the use of a conversational and matter-of-fact tone by the narrator in the poem. Now, if you look at the poem, it is a poem written in free verse. Now, in free verse, there is no bondage of a writer. He can write or she can write in any meter she wants. यहाँ पे भी free verse का use किया गया है. Obviously, कोई rhyme scheme का set pattern नहीं है. और
कॉन्वर्जेशनल टोन है, आपको कभी नहीं लगेगा कि जैसे आप पोएम पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा एक कॉन्वर्जेशन हो रही है। तो उस कॉन्वर्जेशन का क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कैसे यूज किया गया है और उसका क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि क्योंकि एक सेंस में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी एवरीडे प्रॉब्लम्स हमारी है वहां पे भी यही हो रहा है कि मैरिजेस जो है वो ऐसी बन चुकी है, फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए टोन भी एवरीडे टोन रखा गया है ताकि ये मैच करे जो हमारी एवरीडे सिचुएशन हो रही है उसके साथ। तो कॉन्वर्जेशनल टोन का मतलब है कि जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ वैसे ही पोइम का टोन रखा गया है। इफ यू लुक एट द ट्रेडिशनल पोइट्री, वहाँ हम यूजुअली देखते हैं एक सेट राइम स्कीम होता है, एक पर्टिकुलर राइम एंड रिदम होता है जो कि इस पोइम में किसी हद तक लैकिंग है। तो that was the last question, and I need to tell you one thing, that there are some literary devices that have been used in the poem, and one among them is litotes. Litotes is a literary device wherein we suggest an ironic statement and we talk about the positive thing of something which in itself is negative. लाइटोटीज जो है एक लिटरेरी डिवाइस है जहां पे हम किसी नेगेटिव चीज का पॉजिटिव चीज बताते हैं इस सेंस में ताकि वो आयरॉनिक बन जाए। यहां पे अगर आप देखेंगे दिस पोएम इट इज फुल विद दीज लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है लाइटोटीज। यहां पे आप देखेंगे कि फैमिली हिस्ट्री को एग्जामिन किया जाता है, देन आइज को एग्जामिन किया जाता है। दीज ऑल आर नेगेटिव थिंग्स, इवन द स्टूल्स आर चेक्ड, they are all negative things, but they have been presented in a way that we feel like yes they are positive, but they are ironic in itself. वो सारी चीजें हैं आयरॉनिक। अब आप लास्ट की 3 लाइंस देखेंगे, ये सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद दे से दैट शी इज नाउ फिट टू डू जस्टिस टू मिस्टर फ्रांसिस्को एक्स नरोहा प्रभु। दिस अगेन is an example of lito-tea. This itself is ironic, and this shows us the dark side of humanity, the dark side of our society, which discriminates on the basis of gender. So, now let's do an exercise here. You have an exercise true or false. I'll read out these questions and you'll tell me whether they are true or false. Now you have question number 1 in exercise 2. The occasion of the poem is the marriage of Alina. Tell me quickly, is it true or false? Comment. The occasion of the poem is the marriage of Alina. Faizan Majid, true. Yes, the occasion of the poem is the marriage of Alina. Yes, it is true. No, it's true. Now, question number 2. Alina is a cousin of the narrator of the poem. Alina is the cousin of the narrator of the poem. Question number 2. Answer quickly. True. Tawfiq, true. True. Sahil, true. Yes, Alina is actually the cousin of the narrator of the poem. Let's move on to question number 3. Alina alone has to prove herself worthy of the prospective bridegroom. Third one, is it true or false? It is only Alina that she has to prove herself. Is it true or false? It's true, yes, it's true. All of you are correct. Question number 4. Enquiries have been made to find out whether Alina's father is financially sound. Is it true or false? Inquiries have been made to find out whether Alina's father is financially sound. Is it true or false? Vikas Cole, true. Answer me, true. Yes, this is true. Yes. Now question number 5. Yes, Hayat, true. Junaid, true. Yes, it's true.
The children mentioned in the poem are presumed to be from the prospective bridegroom's family. इसका आंसर बताइए. The children mentioned in the poem are presumed to be from the prospective bridegroom's family. अब अगर आप पोएम की तरफ देखें, she's not quite tall enough and not quite full enough. Children will take care of that. Here, I guess the thing is that maybe the poet, she's talking about the future pregnancy of the bride. So this statement will be false in itself. Now, question number 6. Alina's family history has been examined for diseases and conditions. Question number 6. True or false? Alina's family history has been examined for diseases and conditions. Question number 6. Question number 6 is true. Yes, the family history has been examined. क्योंकि जब उसकी एग्जामिनेशन होती है कि मैडनेस तो नहीं है फैमिली में या टीबी तो नहीं है फैमिली में, तो ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री जो है वो चेक हो रही है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 7. Alina's complexion, it is suggested, would compensate for the complexion of the prospective husband. True or false? It's true, yes. Mohsin Khan, true. Yes, it's true. Aqib Lala, false. No, it's true. Complexion is checked and it's accepted that, yeah, this complexion is acceptable. Question number 8. Alina's dental condition is also examined. It's true. Question number 9. Alina's eyes are scrutinized for cataract. It is false. They're just checking whether she has squints, any eye defect in the eyeballs. So question number 9 is false. Now question number 10. Francisco X has to prove himself as an eligible groom. Question number 10. Quickly बताए क्या है? True or false? क्या जो groom है, would be groom, उसको भी अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करना पड़ता है कि नहीं? उसको नहीं करना पड़ता है. तो इन दैट सेंस क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉल्स. सिर्फ प्रूव करना पड़ता है अलीना को. फ्रांसिस्को जो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम है, उसको कोई भी एलिजिबिलिटी अपनी प्रूव नहीं करनी पड़ती है. सो इन दैट सेंस क्वेश्चन नंबर 10 विल बी फॉल्स. हयात इज करेक्ट, इट्स फॉल्स. Yes, it's false. Question number 10 is false. So with this, we have finished Marriages Are Made, which was written by Eunice de Souza. So we'll start up another chapter. And for now, I take your leave. It's goodbye.